So, welcome to this class. In today's class, we will understand the Schmidt-Trigger operation and analysis. In the last class, we tried to understand the advantage of Schmidt-Trigger by going through a simulation, and we understood. So, we had this simulation last time, and this waveform we could see that the waveform is clean even if the input is noisy. So, first we understood the usefulness of the circuit, and once we are convinced that this is useful circuit, we will now try to understand it properly so as to have some detailed operation and its analysis. So, shall we go ahead with this? Okay, great. So, let us start with the points. So, the advantage of Schmidt trigger is understood, that it can not remove as such, but it will produce the output which will not have much effect of the noise. Now, why does it happen, we will understand, and how do we design such circuit, that also we will understand. And some applications also we will understand, some varieties of this circuit they will also be studied. So, first thing first, Schmidt trigger circuit. So, let me draw the Schmidt trigger circuit once again, just for the sake of making the things understandable. So, first we need to have an op amp. You can also draw while I am drawing, so that the way in which we draw the circuit is understood. The purpose is not to make you draw or kill time, but the purpose is to understand how do we draw the circuit, because this may be required when you are required to draw the circuit during interviews or anywhere, anytime. So, inverting, non-inverting, two inputs, and the output. Right. Now, there should be a positive feedback. So, for positive feedback we use two resistors. There is a junction here and one more junction here, one more resistor which goes to ground. Okay. So, let me remove this part. Right. Now, at this point there is input to be provided, and this is actually a feedback, but we call it as a reference voltage, V reference, because this voltage will be used as a reference to compare this inverting terminal voltage with the non-inverting voltage. So, the op amp is going to compare. Why it is going to compare? Because it has large gain, and when we provide negative feedback, the circuit gain reduces because of the negative feedback, but here it's a positive feedback. So, it's a kind of we are having as much gain as the op amp's gain because of the positive feedback. So, because the gain of the op amp is high, the op amp will require extremely small voltage. So, as soon as the inputs have, I repeat this, as soon as these two inputs have a very small difference, even if very small difference, the output will either go to plus Vsat or minus Vsat. This is because there is a positive feedback. Okay. So, one thing everybody will remember, that if I exchange these two terminals, so what is this circuit? What this circuit is? Is there any negative feedback? Yes or no?
Yes. Okay. So there is a negative feedback, and no longer we can call it as a V reference. So there is a negative feedback and the input at the non-inverting terminal. So what is this circuit? It's a non-inverting amplifier. Everybody understood this? So when we exchange the terminals of Schmitt trigger, it becomes a non-inverting terminal. Or when you exchange the terminals of non-inverting amplifier, it becomes a Schmitt trigger. Okay. For example, Priyanka is doing some experiment of non-inverting amplifier, but while connecting the circuit on breadboard, she by mistake changed or exchanged the terminals pin number 2 and pin number 3. She made a mistake unknowingly. Okay, but the circuit she wants to build is non-inverting amplifier. But what will be built actually will be what it will be, Priyanka? Schmitt trigger or inverting amplifier? It will be a Schmitt trigger. So she will get VCC plus Vset or minus Vset. Okay, so as soon as it happens, Priyanka will suspect कि कुछ तो गड़बड़ है, and she will correct the two inputs. So whenever you see a circuit similar to Schmitt trigger or non-inverting amplifier, you should first of all see what you should see, feedback type. Okay, for example, if I draw a circuit like this, I am showing is this because we make mistakes. What is this second circuit? It is a non-inverting amplifier. But as soon as I change the terminals, so it no longer remains non-inverting amplifier, it becomes a Schmitt trigger. Are you understanding this? So to confuse the students, what typically teachers or interviewers do is they draw the circuit similar to a Schmitt trigger, but they provide negative feedback. So you should say that this is no longer Schmitt trigger, this is a non-inverting amplifier. And they draw circuit similar to non-inverting amplifier but provide positive feedback. You should say that this is Schmitt trigger and not non-inverting amplifier. Everybody understood this? Yes or no? Fine. So we should not get confused by the way in which the circuits are presented to us. These are small things which will help you in GATE examination because there is no time. So very less time will be available there. So as soon as you see the circuit, you should first see what you should see first, the type of feedback. This is very important. Okay, so I'll rub out this and please remember to now tell me what is this circuit. I'll set the type of feedback as positive feedback. So this becomes a Schmitt trigger circuit. Okay, now we want to do some experiment and therefore I will provide a DC input which is variable. Because of the positive feedback, I know or we have seen that the output is either plus Vsat, let me write down, plus Vsat or minus Vsat. Okay, suppose this is plus Vsat, let me rub out, for time being we should say that it's plus Vsat. So when this is plus Vsat, this is plus Vsat, this voltage is available as a resistor divider and therefore the voltage at this point will be based on R2 and R1. Okay, let us assume that this is 10 volt, saturation voltage is 10 volt, and if I adjust this to 9K and 1K,
this voltage will be 1 volt. For convenience we will take it as 10k. Of course you can take 9k also. So this will be slightly less than 1 volt. Okay, so it will be around 1 volt. We can measure it if required. Everybody understanding this? Up till now, is this comfortable? Okay, good. So now it means we know what is the voltage at point A. We call this as V reference, and that voltage will be 1 volt. Now suppose because of some reason the output is minus Vsat. What is that reason? We will understand. Minus Vsat, minus 10. So what this voltage it will be? It will be around minus 1 volt. Okay, fine. Anyway, so this voltage at pin number A will not be continuous, since this is the output voltage is plus Vsat or minus Vsat. This will be either plus 1 volt or minus 1 volt. I'm writing simply the value very close to the actual value. If I take this as 9k, it will be exactly 1 volt. But for convenience, we will take 10k, 1k. It will be slightly less than 1 volt. Now we want to see the operation by providing DC variable input. Okay, now how do we provide variable input which is close to the voltage at this point, that is plus 1 and minus 1. Okay, we can do that by, because we want plus and minus both, what we will do is I'll rub out this. We will provide a potentiometer. Okay, potentiometer. We can provide here plus VCC and minus VCC for changing the input, but then even if you change the potentiometer by a small amount, there will be large variation in input, so it's difficult to control that. So what we do is we will not do this. Let me draw this in a better way. It should look like a resistor. Right, this is better resistor. Okay, now what we will do is we will connect two more resistors. Actually I want to draw it like this, but there is no space here. I think I can draw that. Yes, and then we will connect here minus VEE or VE, whatever you call. There is one more resistor here and VCC. So we'll write down the values plus 12 volt and minus 12 volt. Okay, now deliberately the values of the resistors are taken in such a way that, I will rub out this also, that the variation across this variation of this voltage will be from nearly 1.2 volt to minus 1.2 volts. This is what we want, nearly, so that we will be able to cross this reference voltage which is around 1 volt. So in order to do this, what we will do is we will use this as 10k, this as 10k. Out of 24 volts total, if we consider 1 milliampere, so 20 volt will be dropped across 10k. We'll have 4 volts, so we can have 4k resistor also, maybe 3.3k. Okay, you can use 3.3k, so you'll get appropriate level here. We will do some experiment, do some simulation, and then check what is this variation, what is the variation at this point. So shall we do simulation? Did you understand what we are going to do?
we are going to provide DC input which is variable and checking the output, how does it change, when does it change, and so on. So shall we go for simulation to see the things happening? Okay, great, thank you. So let us go to the simulator. The same circuit I have drawn in the simulator. So please check that 10K, 1K, is there any positive feedback? Yes, it is there. Then the 1K resistor is grounded, you can see. Okay, this is grounded. Then the input is given with VCC and VE connected and 10K 3.3K resistor used. So this potentiometer is taken in the form of this POT-HG. It is not simple POT, it is interactive potentiometer. So please use POT-HG as the part during the simulation. Okay, fine. So what we will do is we will rename this to V input or V in 3 because this is the third circuit. There are two more circuits on the same circuit. I will name this as V reference 3 कर सकते हैं because this is the third circuit. Okay, so पहले check करते हैं कि how much is the variation. So let us do simulation. Right, when it is at the center position, आप देखिए कि 50% पे है. So this is actually point not very small. And then if you go to the extreme, then it becomes minus 1.5, and if you go to other extreme, it becomes nearly 1.5. Okay, so did you observe this? Yes or no? Okay, great. So let us now keep it at the center position. Okay, 50% पे रख देते उसको. The output will be zero, almost zero, minus 0.00. It's very close to 0. And now let us check the output. Because of the positive feedback, we expect output to be how much in the linear region or non-linear region? L or N? Hello? Output is minus 10, it's in non-linear region because it's a saturation region. Who answered this? Samiksha, Sakshi, yes. So everybody can answer. This is the beauty of online learning. In the classroom, typically few people answer, but in this online class, anybody can answer. And you should answer, and you should not worry about whether it's right or wrong. We are not here to verify, in the sense to blame somebody that why you are wrong or something like that. We are here to express ourselves. Everybody understanding this? So you have a chance to express yourself. जो क्लासरूम में नहीं हो सकता है ये पॉसिबल है यहाँ. So those I appeal to those students who do not usually respond, they should be attentive and respond. Everybody understanding this? Because you have chance. क्लासरूम में ये होता नहीं usually होता नहीं, but यहाँ you have a power to express yourself. You should exploit that possibility. ये possibility है कि नहीं? At least everybody agrees with that. Right, but this answer should be given by somebody who normally does not answer. वही लोग आंसर करते रहे तो क्या फायदा? 58 people are there. वैसे 83 people है हमारे क्लास में, out of which 58 people have attended. Hello?
Anyway, so let us go ahead. Let us not spend more time on such things. So the output is minus 10, as you can see here, minus 10 है ये. So it's minus saturation, and if you look at this particular reference voltage, it is minus 0.9, very close to what we guessed, minus 0.95. ठीक है. So now I will adjust the input, which will be, say, कितना रखूँ मैं? I think I'll adjust the input and we will see the output also in the same screen. तो थोड़ा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा. हाँ ठीक. अरे okay, I think this is okay. So let me increase the input. कुछ चेंज है आउटपुट में? इज देयर एनी चेंज इन द आउटपुट? नो, नो चेंज. व्हाई देयर इज नो चेंज? व्हाई देयर इज नो चेंज? बिकॉज वी आर नॉट गोइंग टूवर्ड्स द रेफरेंस वोल्टेज. हम रेफरेंस वोल्टेज से आगे जा रहे हैं, हायर वोल्टेज. इट्स minus 9.5, minus 0.95, sorry, minus 0.95, and this is higher than the reference which is given to inverting terminal, so the output voltage will be minus. फिर से आप ज़्यादा करोगे तो आउटपुट विल बी ओनली माइनस सैचुरेशन, बिकॉज इट कैनॉट गो बियॉन्ड दैट. माइनस 10 से नीचे नहीं जा सकता आउटपुट. ठीक है. तो इफ़ यू वांट टू सी द आउटपुट चेंजिंग, व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू रिड्यूस द इनपुट. ये इसको एक्सट्रीम जाके देखते हैं. ओके, सो आउटपुट इज स्टिल minus 10, तो कुछ नहीं हो रहा है. तो विल गो बैक टू 50% and then slowly reduce the voltage. ठीक है. तो अभी कितना हो गया? 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट्स. ओके, अभी माइनस में गए थोड़ा सा, फिर भी आउटपुट कितना है? minus 10. ओके, सो नाउ विल रिड्यूस इट. वी आर गोइंग क्लोज टू minus 0.95. प्लीज रिमेंबर, वी आर गोइंग क्लोज टू द रेफरेंस वोल्टेज. अभी ये रेफरेंस वोल्टेज कितना है? minus 0.95, तो उसके नज़दीक जाएंगे हम. तो minus 0.37, 0.40, 0.44, 0.47, ऐसा करते 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 हम नज़दीक जाएंगे. एंड देन विल कीप एन आई ऑन द आउटपुट. ठीक है. 0.81, 0.85, 0.88, 0.91, वी आर वेरी क्लोज. 0.95. ओके, अभी थोड़ा सा कम है. अभी देखो क्या हो गया आउटपुट. आउटपुट बिकेम, हेलो, प्लस वी सेट. राइट. एंड व्हाट हैपेंड टू दिस फेलो? वी रेफरेंस को क्या हो गया? वी रेफरेंस 1 वोल्ट हो गया. पहले वी रेफरेंस minus 0.95 था, नाउ इट हैज़ बिकम 1. ओके, ठीक है. तो हम क्या करते हैं कि आउटपुट तो चेंज हो गया, हमको फिर से आउटपुट चेंज करके माइनस लाना है. सो वी विल रिड्यूस दिस फर्दर. कुछ होता है कि देखते हैं. इट विल नॉट चेंज. वाई इट विल नॉट चेंज? बिकॉज रेफरेंस अभी कितना है? +1. इनपुट हमने कितना दिया? -1 ऑलमोस्ट. सो विच इज स्मॉलर? V(3) इज स्मॉलर, क्योंकि वो निगेटिव है. स्मॉलर वोल्टेज हमने इन्वर्टिंग टर्मिनल को दिया है एज कंपेयर्ड विथ नॉन इन्वर्टिंग. तो आउटपुट प्लस आएगा, विच इज देयर, प्लस वी सेट. बिकॉज ऑफ द पॉजिटिव फीडबैक इट इज प्लस वी सेट. ठीक है. सो व्हाट वी विल डू इज वी विल नाउ इंक्रीज द इनपुट. ठीक है. नाउ विच वैल्यू वी हैव टू अप्रोच? Can somebody tell which value we have to approach so that the output will change? इनपुट कौन से वैल्यू तक जाना चाहिए तो आउटपुट चेंज हो सकता है पॉसिबली? वी रेफरेंस. अभी वी रेफरेंस कितना है? 1 वोल्ट है. तो हम क्या करते हैं? 1 वोल्ट के नज़दीक जाते हैं. पहले 0 करके देखते हैं. 0 किया, -0.03, -0. इट्स ऑलमोस्ट 0. तो आउटपुट क्या हो गया? फिर से पॉजिटिव ही है. So now I'll increase the input.
0.03, 0.06, 0.1, 0.2, 0.3, ठीक है, 0.4. So I have to reach 1 volt. 0.6, 0.7, 0.8. थोड़ा स्लो जाना चाहिए बिकॉज वी वांट टू सी द थिंग्स हैपनिंग. 0.95. अभी आउटपुट क्या है? 11 वोल्ट्स. नाउ विल गो क्लोज टू 1.00. अभी 0.98 है. स्टिल इट इज़ लेस. अभी देखो आउटपुट क्या हो गया? -10 हो गया. और रेफरेंस क्या हो गया? -0.95 फिर से. Everybody understood this? Yes. Now what I will do, I will try to draw the transfer curve of this particular circuit. So let us pause. Let us pause the simulation, stop the simulation and go to our board. ठीक है? Right. So let me keep this circuit as it is. And so y-axis, then x-axis. On the x-axis we have input, on the y-axis we have output, and in the output we have only two possibilities, either plus Vsat or minus Vsat. 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, minus Vsat. These are the two possibilities. Input में कितना possibilities है? Infinite possibilities, because input is continuous. Yes or no? So input has continuous facility, continuous. Output में दो ही possibilities. Right. Now assume that the input is 0. Input is 0. So suppose the output is minus Vsat. Assume that the output is minus Vsat. Output is minus, I'll just increase the size so that it is visible. Minus Vsat. What will be the reference voltage? If the output is minus Vsat, यहाँ reference voltage कितना होगा? -1, nearly -1. Okay. So the output will not change unless the input has reached -1, and it will become plus. So at the point where the input reaches -1, whenever the input goes beyond -1, the output will go positive. So this is the point at which the output will go. Okay. Right. Now when you try to increase the input beyond, so towards like positive, -1 तो हम गए, -1 के पीछे जाएंगे तो भी आउटपुट प्लस ही आएगा. इफ द इनपुट इज इंक्रीज्ड, अगर हम 0 पे आ गए, तो इनपुट 0 है. आप देखिए यहाँ इनपुट 0 है और यहाँ -1 है. ये मैं लिख देता हूँ इधर. इनपुट 0 वोल्ट, यहाँ -1 है. तो कौन सा ज़्यादा है? 0 और -1? 0. दिया कहाँ है वो? वेयर इट इज़ कनेक्टेड? इन्वर्टिंग पे. इन्वर्टिंग टर्मिनल पे स्मॉल वोल्टेज है, सॉरी लार्ज वोल्टेज है एज कम्पेयर्ड विद नॉन इन्वर्टिंग. देयरफॉर द आउटपुट इज माइनस. ठीक है. कुछ गड़बड़ हो गया क्या? Let us assume this particular situation, doesn't matter.
right. Anyway, when the input crosses, I'll write down +1 here and -1 here. 1, 2, 3, -1. When the input goes beyond +1, the output will be, when the input goes beyond +1, the output will be negative. So assume that the input is somewhere here. Input is positive going to inverting terminal, therefore the output will be negative. So the output I'll draw it here. When the input is increased still further, the output will still be negative. Okay, still be negative. Now assume that the input is reduced. If it reaches 1 volt, still the output will be negative. So it will be like this. Then when you reduce the input below -1, then the output will suddenly go to +1, plus Vset. It means this, we are going this way. The arrow is just to make sure to understand how the input is changed. ठीक है, तो इनपुट कितना है, इधर है, somewhere here. Input is somewhere here. So it is minus, suppose 2 volt. If the input is -2 volt, output is going to be plus, which is correct. So now input has increased, or we are increasing the input. Even if we reach -1, the output will not change, because the output is positive, and therefore reference is also positive, and the reference positive यहाँ है. So we have to cross this. Unless until we cross this +1, it doesn't work. It doesn't show change in the output. So क्या हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा. ठीक है, तो मैं वो निकालता हूँ. While increasing input, I am showing it with green color, and while decreasing, I am showing it with. So everybody understanding this? This is the graph of, थोड़ा गड़बड़ हो गया, स्केल में गड़बड़ हो गया, but we'll correct that, no problem. Right. Everybody understood this, or any query? When you do this experiment, whatever I did on your own, green line is whenever the input is increasing. Whenever the input is increasing, जैसे कि यहाँ से input increase हो रहा है. Actually green and these lines are single line, but मैं दिखाने के लिए निकाल रहा हूँ. These are not two lines as such, it's a single line. और जब हम इनपुट इंक्रीज करते तो ऐसा फॉलो होता है आउटपुट, एंड वेन एवर वी डिक्रीज द इनपुट, ये ऐसा फॉलो होता है. ये शो करने के लिए हमने दो कलर यूज किए. आदित्य, डिड यू अंडरस्टैंड? हाँ, राइट. ओके, सो इन दिस पर्टिकुलर diagram, the difference between two inputs, I repeat, the difference between two inputs at which the output changes, this difference is called as hysteresis. यानी कि ये हमारा hysteresis हो गया, इसको बोलते हैं hysteresis. So this difference, actually the difference is called hysteresis, not the area.
विल पुट इट इन प्रॉपर वे। ये जो डिफरेंस है ना, इसको हिस्ट्रेसिस। सो व्हाट इज द हिस्ट्रेसिस ऑफ दिस सर्किट? हमारे यहाँ 2 वोल्ट हिस्ट्रेसिस है, ठीक है। हम इसको 2 वोल्ट से 1 वोल्ट करना चाहते हो। सर्किट में क्या चेंज करना चाहिए बताइए? हिस्ट्रेसिस हमको 1 वोल्ट का चाहिए, क्या चेंज करूँ मैं? इनपुट या रजिस्टर्स? I और R रजिस्टर्स। विच रजिस्टर चेंज किया तो सही रहेगा? कौन सा भी कर सकते हैं, बट ये 1K का कितना करूँ मैं? ये 1K रजिस्टर्स कितना करूँ मैं? तो ये 2 वोल्ट से 1 वोल्ट हो जाएगा। रिड्यूस तो करना पड़ेगा, बट कितना करूँ? देखिए ये हाफ हो रहा है ना, 2 वोल्ट से 1 वोल्ट हाफ हो रहा है। यहाँ 1K से कितना करूँ? 1/3 या 1/4? 500 ohms। वेरी गुड, 500 ohms, ठीक है। तो हम ये 500 करके देखते हैं इधर। उस एक्चुअली देर इज़ नो रीज़न फॉर रिपीटिंग दैट, बट एक बार करके देखा तो अच्छा लगता है, ठीक है। 500 ohms। तो फिर से सिमुलेट करते। द आउटपुट इज -10, द रेफरेंस इज नाउ -0.5। आप देखिए यहाँ रेफरेंस इज -0.5 एंड देन विल गो टूवर्ड्स -0.5। अब इधर -0.5 पे जाएंगे, ओके। अभी 0 करते हैं, पहले 0 तो होने दो, ठीक है। -1, -2, -2, 3, -0.54। अब ये हो गया 11 वोल्ट। सो नाउ द क्रॉसिंग इज टेकिंग प्लेस एट दिस रेफरेंस। पहले माइनस था, अभी ये पॉजिटिव आउटपुट हो गया, इसलिए वो पॉजिटिव हो गया। डिड यू अंडरस्टैंड दिस मच? हाँ, लेट अस गो टू द बोर्ड एंड देन राइट इक्वेशन फॉर दीज 2 वैल्यूज। ये हमारा वैल्यू है और ये हमारा और एक वैल्यू है, तो आप इसका भी इक्वेशन लिख दीजिए। इज इक्वल टू सो आई राइट दिस इक्वेशन। इसको हम R1 बोलते हैं, R1, और इसको हम R2 बोलते हैं, ठीक है। तो वोल्टेज डिवाइडर फॉर्मूला यूज़ करना है बस, बाकी कुछ करना नहीं। तो R क्या लिखना है? R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, और ये हमारा प्लस है कि नेगेटिव है? प्लस है कि नेगेटिव? ये प्लस है, तो प्लस आने के लिए इधर प्लस विसेट लिखना चाहिए, ठीक है। अदरवाइज वो प्लस नहीं आएगा, ठीक है। नाउ दिस इज एक्चुअली अ थ्रेशोल्ड पॉइंट एट विच द आउटपुट चेंजेस। सिंस इट इज अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट, क्योंकि ये अपर थ्रेशोल्ड पॉइंट है, लोअर थ्रेशोल्ड पॉइंट है, तो इसलिए इसको यूटीपी बोलते हैं और इसको एलटीपी बोलते हैं, ओके। तो क्या लिखूं मैं इधर क्या लिखूं? यूटीपी। मैं अभी इधर एलटीपी लिखता हूँ, आप उसका फॉर्मूला लिख लीजिए। -Vsat इंटू R1 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, ठीक है। So what is the hysteresis in terms of UTP and LTP? What is the hysteresis in terms of UTP and LTP? Hysteresis कितना रहेगा in terms of UTP and LTP? UTP minus LTP, right? Good, very good. So UTP minus LTP is the hysteresis. तो स्मिथ ट्रिगर के डिज़ाइन में आपको UTP LTP दिया जाएगा,
तो रजिस्टर्स फाइंड आउट करना इजी है। ओके, फाइन। एवरीबडी अंडरस्टूड दिस मच? हाँ, इस हिस्ट्रेसिस किसके लिए रहता है? यस 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 यस, ओम यू हैव आस्क्ड गुड पॉइंट। तो हम क्या करते हैं, इसके लिए एक वर्चुअल सिचुएशन लेते हैं। सपोज द इनपुट इज देयर, अपना नॉइजी इनपुट है, समझो कि इनपुट नॉइजी है, तो इसलिए मैं एक इनपुट लेता हूँ। आई एम टेकिंग दिस इनपुट साइन वेव, ठीक है, और उसके ऊपर हमारा नॉइज़, ठीक है। अभी तो नॉइज़ तो अच्छा दिखाई दे रहा है, लेकिन वो नॉइज़ ऐसा ऐसा कुछ तो होगा, ठीक है। सो विल कीप इट सिंपल नॉइज़ सो एज टू इमेजिन इट प्रॉपरली, ठीक है। अभी इसको अंदर वाले को हटाते हैं। अरे सब गया, कैसे करूँ? ठीक है। नाउ दिस इज सिग्नल विथ नॉइज़, ये समझ में आ गया आपको? सिग्नल विथ नॉइज़। Now, because of the hysteresis, suppose the reference point is somewhere, V reference is somewhere here, like UTP. Suppose this is UTP, ठीक है। तो यहाँ आप देखिए, it is crossing it one time, पहला क्रॉसिंग होता है इधर। UTP के आगे जाएंगे UTP के आगे जाएंगे तो आउटपुट माइनस आता है, इधर माइनस आ गया, तो यहाँ हम माइनस आउटपुट लिखते हैं। इधर थोड़ा छोटा वेवफॉर्म करते हैं लेकिन निकालते हैं। आउटपुट टाइम वर्सेस आउटपुट, तो आउटपुट यहाँ क्या होगा? माइनस जाएगा, ठीक है, माइनस जाएगा। नाउ द इनपुट इज, समझो कि इनपुट यहाँ है, ओके, इट इज मोर देन यूटीपी। आउटपुट बदलेगा क्या? विल द आउटपुट चेंज? नो, क्योंकि यहाँ हमारा यूटीपी है और इनपुट हम बढ़ा रहे हैं, तो आउटपुट वैसे के वैसे रहेगा, ठीक है। सो हियर आउटपुट विल नॉट चेंज, हियर ऑल्सो आउटपुट विल नॉट चेंज। हियर क्या होगा? हियर आउटपुट चेंज होगा, yes or no at this point? No, it will not change because we have seen that when we reduce the input, ये ऐसा जाता है, इधर -1 को चेंज होता है, यानी कि ये यूटीपी है, तो हमको एलटीपी कहाँ है वो ढूंढना पड़ेगा। तो ये जो इनपुट है ना, ये ऐसा करते 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 जाएगा नॉइजी, और हम एक एलटीपी भी निकालते इधर। समझो कि ये हमारा एलटीपी है, एलटीपी। तो जब एलटीपी चेंज होगा तो आउटपुट चेंज होगा, एंड देन फिर आउटपुट चेंज होगा जब द सिग्नल क्रॉसेस यूटीपी। सो अगर समझो कि यहाँ नॉइज़ इतना बड़ा है, समझो कि नॉइज़ अभी ज़्यादा हो गया, सपोज नॉइज़ ज़्यादा हो गया ऐसा, तो यहाँ बहुत सारे बार वो चेंज हो रहा है इधर, बट दिस विल नॉट बी रिस्पॉन्डेड, क्योंकि वंस द सिचुएशन चेंजेस, एक बार यूटीपी क्रॉस कर लिया तो आपको एलटीपी के नीचे आना चाहिए, अदरवाइज सिचुएशन चेंज नहीं होता है। तो एज लॉन्ग एज द नॉइज इज लेस देन यूटीपी एंड एलटीपी, यूटीपी एलटीपी के बीच में नॉइज है, तो आपको कुछ फिक्र करने की ज़रूरत नहीं, आउटपुट विल बी क्लीन, ओके। लेकिन आउटपुट अपना ऐसा आ गया, समझो कि ओम ने सिग्नल लिया है और उसमें नॉइज़ इतना ज़्यादा है कि वो ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, सो ऑब्वियसली द आउटपुट विल चेंज, यस और नो? नॉइज़ इतना बड़ा है, इट इज़ क्रॉसिंग एवरी टाइम यूटीपी एलटीपी, तो आउटपुट आएगा। अगर ऐसे सिचुएशन में आउटपुट क्लीन चाहिए तो क्या करना पड़ेगा? यूटीपी और आगे लेके जाना पड़ेगा, एलटीपी और नीचे लेके जाना पड़ेगा,
But did you understand what did we do today? Schmidt trigger आपको समझ में आ गया? Yes. So shall we take a pause? Okay. So bye for now, and we will meet in the next class. Thank you.